एग्रीगेट डिमांड, हमने क्या सुना हुआ है? डिमांड सुना हुआ है, हमने इंडिविजुअल डिमांड सुना हुआ है, हमने मार्केट डिमांड सुना हुआ है, यूज भी किया हुआ है। एग्रीगेट डिमांड फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे होंगे, इससे पहले अभी तक कहीं नहीं यूज हुआ है। एग्रीगेट डिमांड एडी, इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू of final goods and services which all the sectors of an economy are planning to buy. planning to buy, willingness, क्या स्टडी हो रही है? willingness, planning to buy at a given level of income. अगर आपकी इनकम 100 रुपए होगी तो आपकी कंजम्पशन कितनी होगी? 1 लाख होगी तो आपकी कितनी होगी? 1 करोड़ होगी तो कितनी होगी? तो डिफरेंट लेवल्स ऑफ इनकम पे हम स्टडी करेंगे एग्रीगेट डिमांड। तो एग्रीगेट डिमांड इट रेफर्स टू द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज विच all the sectors, matlab all the residents of a country, everyone in the country, they are planning to buy. Keyword is planning. What they actually buy? No, what they are planning to buy. तो क्या स्टडी हो रही है? willingness, planning to buy at a given level of income during a given period of 1 year. In other words, AD is the aggregate expenditure that different sectors are willing to incur. What you are planning to buy is equal to how much you are planning to spend. एक ही बात है। मॉनेटरी टर्म्स में अगर बात करें तो ये हो जाएगा एग्रीगेट एक्सपेंडिचर willing to incur during a given period of time. It means AD and aggregate expenditure are the same. Aggregate demand, value of final goods and services which all the sectors are willing to or planning to buy, which will be equal to how much they are planning to spend, how much they are willing to spend. Aggregate demand or aggregate expenditure एक ही बात। It is important to note that aggregate expenditure refers to the planned expenditure, how much the consumers or the buyers are planning to spend, and not the actual expenditure. Actual expenditure will be how much you actually end up spending. Equilibrium आपके desires, आपकी willingness को स्टडी कर रहा है। आप चाहते क्या थे, वो मिला कि नहीं मिला, एक्चुअली क्या हुआ वो तो बात की बात है। आप क्या चाहते थे? कंज्यूमर बिहेवियर जब हमने स्टडी करा था, डिमांड क्या होता है? तो कंज्यूमर बिहेवियर में हम उसकी इट इज द क्वांटिटी व्हिच द कंज्यूमर इज विलिंग टू बाय एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ प्राइसेस। वहां पे भी विलिंगनेस ही स्टडी करी थी, कंज्यूमर्स की, प्रोड्यूसर्स की, तब जाके मार्केट इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे भी कीवर्ड इज विलिंगनेस, हाउ मच द बायर्स आर प्लानिंग टू बाय, planning to spend. So AD is the total expenditure that all the four sectors of an economy, household, firm, government and rest of the world, all the sectors, एक ही बात है। It is the total expenditure that all households, firm, government and rest of the world are planning to incur during a given period of time. AD is a flow concept. एक होता है stock concept, एक होता है flow concept. Something which is measured over a period of time is a flow concept. Aggregate demand, income, expenditure, ये सब क्या होते हैं? Flow concept. Clear? Meaning of aggregate demand exactly याद होना चाहिए। Very very important point. कुछ बच्चे differentiate नहीं कर पाते, तो यहीं पे आ गया। What is the difference between market demand and aggregate demand? Apart from market demand is a micro concept, aggregate demand is a macro concept. अरे why? तो बताया आपको कि मार्केट डिमांड इज द टोटल डिमांड बाय ऑल द इंडिविजुअल्स ऑफ अ कंट्री फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट की डिमांड एनालाइज हो रही है, सबकी, बट एक प्रोडक्ट की। एग्रीगेट डिमांड इज द टोटल डिमांड फॉर ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज in the entire economy, whereas market demand is the total demand for one commodity in the market. कोई भी डाउट? क्लियर है? डिफरेंस बिटवीन मार्केट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड, मीनिंग ऑफ एग्रीगेट डिमांड, कोई डाउट?